अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उसामा रमज़ान है और आज हम बात करेंगे लिवर सिरोसिस के ऊपर। क्लिनिकल एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, बेसिक एस्पेक्ट्स जो हैं, जो आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल पर आप पढ़ते हैं, उस तरह से हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि अगर किसी मरीज़ में आपको जो कॉमन काजेज़ ऑफ सिरोसिस मिल जाती हैं, जैसा कि हेपेटाइटिस हैं, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी, या कोई अल्कोहल का इंटेक कर रहा है, या किसी को फैटी लिवर डिजीज़ है, तो उन रिस्क फैक्टर्स की मौजूदगी में किस पेशेंट को सिरोसिस हो चुकी है और किसको होने के चांसेस ज़्यादा हैं और किसे सिरोसिस नहीं हुई। तो वी ऑल नो दैट कि बायोप्सी इज़ द अल्टीमेट वे टू make a histological diagnosis of cirrhosis, but as this is an invasive procedure and no one likes that procedure, especially the patient, so there must be something else by which we can make an estimate that the patient have cirrhosis or there is no cirrhosis at all, because there is going to be a different treatment plan for a patient who is cirrhotic and the person who is not cirrhotic patient. And also I would like to share with you common scenarios which we face clinically while working as a doctor. Either you are working as a gynecologist or working as a surgeon or a general physician, there are a lot of ways the situation can present to you. This situation that a patient who is hepatitis C positive and the doctor is concerned that maybe there is already a liver damage that is going to be a hurdle during surgery or the C-section or whatever other disease the patient have already. So let's go into the details of the topic of liver cirrhosis. हम बात करेंगे कि सिरोसिस आपका जो है डायग्नोसिस बगैर बायोप्सी के वो कैसे आप बना सकते हैं, या आपका जो सिरोसिस का डायग्नोसिस है उसके जो नॉन इन्वेसिव मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सिरोसिस की डायग्नोसिस इन्वेसिव मेथड्स से भी हो सकती है जैसे लिवर बायोप्सी, और नॉन इन्वेसिव मेथड से भी हो सकती है। तो इन्वेसिव को तो कोई पसंद नहीं करेगा बिकॉज इट्स अ पेनफुल एंड रिस्की प्रोसीजर एज वेल। तो अदर प्रोसीजर ज़्यादा क्लिनिकली सूटेबल होते हैं बहुत से सिनेरियोज में, जहाँ पे आपको एक ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए कि कोई भी ट्रीटमेंट जो आप देने लगे हैं किसी भी बीमारी में वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा उन पेशेंट्स में जिनमें ऑलरेडी सिरोसिस हो चुकी है। जैसे एक पेशेंट है, उसे सी सेक्शन करवाना पड़ गया है, तो उसको थोड़ा सा हम डिफरेंटली कंसीडर करेंगे सर्जिकल रिस्क के हवाले से भी। अगर किसी को सिरोसिस नहीं है तो उसके रिस्क थोड़े कम होंगे। इसी तरह अगर कोई मरीज़ किसी भी सर्जरी के लिए बुक्ड है, जैसे थायराइड की सर्जरी है, अगर उससे ऑलरेडी सिरोसिस हो गई है तो उसके लिए उसके थोड़ा सा डिफरेंट मैनेजमेंट प्लान होगा। तो कैसे बगैर बायोप्सी के हम पता चला सकते हैं कि मरीज़ को लिवर सिरोसिस है या नहीं। तो सबसे पहले तो आपको हिस्ट्री में कुछ क्लू मिल जाते हैं, जैसा कि जो ड्यूरेशन ऑफ रिस्क फैक्टर है, जैसे किसी को अगर हेपेटाइटिस सी था वो कोई 10 से 15 साल से उसकी जिस्म में मौजूद था और उसके लिए मरीज़ों ने अक्सर कोई इलाज नहीं करवाया होता, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ चांसेस हैं कि इन्हें सिरोसिस हो गई होगी। इसके अलावा इसी तरह हेपेटाइटिस बी भी अगर किसी को है और ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो उसमें भी, उसके अलावा जो रिस्क फैक्टर अल्कोहल का इंटेक अगर कोई बताता है कि मैं ले रहा हूँ, उसके अलावा अगर कोई पेशेंट का कभी कोई फैटी लीवर के बारे में उसको थोड़े पहले से किसी रिपोर्ट में पता था, या पेशेंट ओबीज़ है बहुत ज़्यादा,
और उस सूरत में भी आप सोच सकते हैं कि यहाँ चांसेस हैं उस पेशेंट को सिरोसिस होने के। तो अक्सर ऐसे नहीं है कि कोई भी पेशेंट हो तो उसमें हम सिरोसिस सोचना शुरू करें, हमें अक्सर रिवर्स में सोचना पड़ता है। जैसे किसी को सर्जरी के लिए प्लान किया गया था तो उनको हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव डिटेक्ट हो गया, या किसी को सर्जरी के लिए बुक किया गया था तो अल्कोहल की हिस्ट्री उन्होंने शेयर नहीं की, लेकिन कोई डिरेंड एलएफटीज आ गए तो हमें सस्पिशन हुई कि मे बी वहाँ सिरोसिस ना हो गई हो। अच्छा, हिस्ट्री तो आपने ले ली, उसके बाद फिर हिस्ट्री ही में के बाद आप आएंगे एग्जामिनेशन पर। तो एग्जामिनेशन की बेस पर भी आप सिरोसिस का कुछ एस्टीमेट लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जामिनेशन पे आपको जो स्टिग्मेटा ऑफ क्रोनिक लिवर डिजीज़ मिलेंगे, जिसमें जो ज़्यादातर फीचर्स हैं, दो जो मेन ख़राबियां हैं उन वजह से पैदा होते हैं। एक तो हेपेटिक इनसफिशिएंसी के फीचर्स होते हैं, और जो सेकंड सेट ऑफ जो आपके पास फीचर्स होते हैं वो पोर्टल हाइपरटेंशन के होते हैं। तो इन दो रीजंस की वजह से आपके पास मल्टीपल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स मिल जाती हैं। तो जैसे हेपेटिक इनसफिशिएंसी की वजह से आपको जो जॉन्डिस मिलने के चांसेस होते हैं, बिकॉज लिवर इज़ द प्लेस टू मेटाबोलाइज बिलिरुबिन। देन वी कैन आल्सो हैव spider angioma due to unmetabolized estrogen, and we can also have testicular atrophy due to unmetabolized estrogen as well। और उसके बाद पोर्टल हाइपरटेंशन के जो कुछ नुमाया फीचर्स हैं उसमें आपके पास जो वेरिसेस की डेवलपमेंट है, जिसमें एसोफेजियल वेरिसेस की डेवलपमेंट वो मिल सकती है। फिर ऑन एग्जामिनेशन तो आपको वो नहीं मिलेगी, लेकिन इसका जो पोर्टल हाइपरटेंशन का फीचर एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा, दैट इज़ स्प्लीनोमेगाली। तो स्प्लीनोमेगाली कैन बी देयर आल्सो। ascites is somehow due to portal hypertension। so एग्जामिनेशन पे आपको अगर एक मरीज़ जिसमें हेपेटाइटिस सी मौजूद है या पॉजिटिव आ गया है, उस मरीज़ में अगर आपको जॉन्डिस मिल जाती है और इसके अलावा आपको स्प्लीनोमेगाली या फिर ascites मिल जाती है या हेपेटोमेगाली मिल जाती है, तो देयर आर चांसेस दैट देयर इज़ ऑलरेडी लिवर सिरोसिस। So next in line we have investigations on which we can make an estimate that the patient have cirrhosis or not. So how we can make sure or can get help from the investigation is that, so in investigations we have two types of investigations: radiological investigations and simple blood related. Via blood we can do some tests to make an estimate that the patient is having cirrhosis or not. So in basic tests we can have in basic tests platelet levels are a good indicator for cirrhosis. So platelet count less than 150 is sometimes suggestive of liver cirrhosis secondary to portal hypertension and splenomegaly. And then sometimes there is also reduction of hemoglobin because of the development of varices and ongoing minor blood loss through GI tract, so decreased HB hemoglobin. Then in cirrhosis there is often a reversal of pattern of liver functions, AST and ALT. The ratio is often reversed. Usually the pattern we see is ALT is more than AST, but AST
becomes more than ALT in cirrhosis. I know that you people are going to say that AST more than ALT in a ratio of 2:1 is often diagnostic of liver cirrhosis due to alcohol or alcoholic liver disease. But here we are talking in the context of liver cirrhosis. And other labs like albumin, decreased level of albumin is often indicative of chronic liver disease or liver cirrhosis. Also, PTINR is also somewhat helpful, but in acute settings. In chronic setting, it is often being found as normal. Then increased bilirubin level is also sometimes suggestive of cirrhosis. So sometimes there is cirrhosis and there can be a situation where you will not find all these labs supportive enough, or the platelet can be normal, not fully normal, borderline normal, HB can be normal, and ALT, AST may be totally normal. Especially ALT and AST is not a good indicator of liver function test. So these are not very good indicator of liver damage. So radiological investigation, the most commonly used investigation is ultrasound abdomen, by which we can get help to make a diagnosis of liver cirrhosis. But please don't be fooled by the word coarse liver. It is often being written on many ultrasound reports. So whenever next time you see coarse liver or irregular texture, please do make a correlation with all other history and examination parameters to make a combined diagnosis, not just based on ultrasound. Often people send us calls regarding the patient is having coarse liver, so tell us what to do next. So do think about other parameters as well, not just a word written on an ultrasound report saying that coarse liver is going to be a diagnosis of cirrhosis. We need all the parameters combined. And now talking in terms that on ultrasound, what features favor liver cirrhosis. So first is the texture of the liver that often becomes coarse, irregular, and then splenomegaly often being picked on ultrasound. It's a sensitive investigation that can pick splenomegaly, and then ascites is also being picked on ultrasound. So these features make the cirrhosis more likely. Then other investigation which can help us in making the diagnosis of cirrhosis is sometimes fibroscan, that can be used in scenarios where you don't have any of these findings but the results are somewhat equivocal. Then we can use fibroscan. And then MR based investigation, MR elastography is also sometimes helpful. And then next, combining the investigations together, then we can make use of clinical scores. There are some clinical scores on which we can make a guess about cirrhosis. What are these scores? The commonly used score is APRI score, APRI score, and then we also have FIB-4 score. These clinical scores have their own limitations, so start always from the history, go into the examination, get help from the investigations, and then also you can get help of the clinical scores. So I hope that my video have cleared many of your
concerns and issues regarding when to say the patient is having cirrhosis or not. So in short, whenever you see someone is having positive HCV report, or someone who is being picked upon donation of the blood as having hepatitis B, or someone who is taking alcohol from a long time, or a pregnant lady who went to a female doctor for the consultation regarding the delivery and came to know that upon baseline investigation she is having hepatitis C positive. All of these subset of patients are going to be managed differently if they have cirrhosis, and if they don't have cirrhosis, then consider them as the normal patients which can be managed on routine basis. Okay, so I think the discussion regarding the cirrhosis, how to diagnose cirrhosis, and when to think of cirrhosis, it was a general discussion. Then we can move in the next video series. I would like to share other aspects of cirrhosis as well. Thank you. I hope this video helped you people. Please like, subscribe and share this video.